angang sa ngasi 11th class ki ani suba chapter haurasi chapter ki maming structure of atom ne akhoi atom asi karino kari na semi my properties na karino si chemistry da atom asi atom na pot khuding mak sem bani aduna akhoi atom asi karino asi khang da ba yade the first theory of atom ade atom asi karino haibasi ngasi dagi chahi ade 1808 ta John Dalton kaupa English ki chemist amana hairame magi theory se karino atom asi khwai maruina John Dalton gi no wahai maning janga ga dawdi si wai se ning jaga dawni it is indivisible particle haibati suppose akhoi na pot am lawre सिगिजे नुंगधंग न थाकान सिगिजे अनि नत्रक अहुम थो अनि अब सिगिजे अमुक कुपन थुगाइ बि याय अब सम पिकन सम थुगाइर कांदा ख्वाइ अरोइब कायु यादव पोट अमा लाकनी दना याम पिसक पिकपा जॉन डाल्टन गी मोत अदुगी तो एटम कवे मान करी है एटम्स आर टाइनी पी इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैबदी एटम से मु अखोइ न थुगाइ बंग अमरोय अदगी अनि सो मान करी है एलिमेंटम की एटम कहीं लोइन माने अतोप एलिमेंट ओरगदि मा एटम दो अतोप हाने की एटम दुगा हाने की एलिमेंट की एटम का खेनै हैबदी ऑक्सीजन की एटम न स्माइल ओरगदि हाइड्रोजन अधिक नाइट्रोजन की एटम न अतोप कैनो मोरमगनि माय प्रॉपर्टी तोंगान गनि नाइट्रोजन की एटम्स कहीं लोइन प्रॉपर्टी मानगनि ऑक्सीजन की लोइ मानगनि अदो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन का दिखेना गनि बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड no सेम बंगमदे डिस्ट्रॉय तो बंगमदे डिवाइड तो बंगमदे कोई सीधा हाई घर मसीगी थियरी जी चाही कुंथ्राम न फुम यांखै अमा 1880 अदोय भौ यानरमी करिगनो द मतम दो बहुदा मीना एटम जी डिवाइड तो बंगमदे अराउंड 1880s people started dividing atoms and as soon as they divided atoms they knew that John Dalton की थियरी जी याद रहे अहम एक्सपेरिमेंट करिनो एटम डिवाइड तौबगी मसी कैथोड रेज कवे कैथोड रेज करिनो सीधा ग्लास की स्पेंटर ट्यूब अम लौरे सोना कंदा प्लेट अम थमे सोना कंदा हुजिक सपोज सीधा प्लेट अम थमे सिकिसे बैटरी ना कनेक्ट तौरे से अनि से and they connected to very high batteries of the region of 20,000 volts 50,000 volts matam the what they saw was there was some rays which were coming from the negative terminal which is called cathode and therefore those rays were called cathode rays kedo bai kaurino cathode rays cathode tagi lai aduna cathode rays kaurino adagi moina kari ui cathode rays si positive lom the plus tau yong se minus tagi se plus lom the lak pani so that's why it's called cathode rays experiment khar tawrasi moi cathode rays ki property khang na ba moina sida slit am ha pe suppose atoba slit am sida hapsel le khala jao sida hapsel le khala jao ador ga sida cathode rays am to lakti ab karino cathode rays smai chat pangam da bani na adun kari hai cathode rays travel in straight line adagi di moina sida cathode rays ki lambi sida electric field ama half hai plus am minus tawraga aduraga di cathode rays si positive lom da bend tawe aduna kari hai no cathode rays si negatively charged ne and if they put a magnet से करी है यो चाबी में स्पाइन थम्मगदी यो चाबी सिना depending on their polarity this cathode rays are also deflected adudi magi properties yengasi they start from cathode that's why they are called cathode rays they are not visible cathode rays koi ubang amdi cathode rays u gyaraga di kedogani last sida cathode rays na laiba mahom do सीधा खोई ना पोत खरा
sida zinc sulfide matam do zinc sulfide sine zinc sulfide ki coating tawe de karina khoina phalang de sunu tai bad maina sunu se mahi da hapaga sunu tai na maina zinc sulfide se mahi amga tosanaraga magi psm ga zinc sulfide sida tai zinc sulfide tai reason karigino sidagi cathode ray lak ja khoi u banate ada cathode rays na zinc sulfide ta pan ba mafam je sida mai macha tik tik toranga ngale mai sa second gi manung da mut khidoine ador ga so cathode rays kadai de yori edu khange dana ada zinc sulfide se sie nai matam di am sie na material ne they travel in straight lines they are deflected by both electric field and magnetic field. They can turn a wheel when placed in its path. Adi kaheta rasmatar kanghong am thamaga di cathode rays na sidai lakanda kanghong ji unge aduna haibadi cathode rays possess kinetic energy. Kinetic energy the way the kari no kinetic energy is given by half mv square aduna di cathode rays have mass haibani sin hari se kari no it has kinetic energy haibadi it contains some mass. And this is the very very important observation. Akoi cathode se atopa pot sum mayam na pot amam na sum sem cathode se kaso nate metal amani since the metal is sum hongaga moina cathode ray tube se same kanda adudagi live cathode rays de chamani aduna haibdi kaino cathode rays das yauriba poto akoi hoje khange karino electrons ne se khange matam de electrons ne se khangde cathode rays de yauri poto pot khodig mak to yawe. Okay, then there were two experiments, one done by J.J. Thomson, another by Millikan. Animak hyphen nainasi. J.J. Thomson na E by M ratio ko bo kainom pothoya. E by M ratio di E di magi charge of this cathode ray divided by its mass. Sida khoi sida taruk suba properties kari hai. Akhoi na cathode se atop tongan no material ne same kana magi characteristic chamani characteristic kari characteristic no C characteristics in magi E by M ratio se. Charge divided by its mass is same for any cathode that J.J. Thomson used, and this was found to be constant, and it is this value. Last sidagi akoi M puthokodane sigi masing se khangchel number se ningchang drasu yai kasu kaide E by M constant oi se tang khang adagi di Robert Millikan ko nu pam na atope experiment nu tawi experiment se oil drop method ka oil drop experiment sida kaidore mana sidagi thau sida khar kapsal hai sida mayai da ahobam thamme thau si droplet macha jasmain tarakani, and he has a microscope here from which he can see these oil droplets very clearly, and by observing the velocity sigi oil drop se makha dasmain tarakadoin magi speed am leram gani, and because force due to gravity is called mg, so if you know, because we know g is the acceleration due to gravity, sigi viewing microscopes no all is a karino sigi droplet se kayam yang na tai my velocity sidagi you can find out mass of each droplet, so you know the droplet mass of each droplet magi arum me dokhange. Okay, then what he did was he connected this to again voltage source, and he put this as mathak is na positive thame makha is a negative thame, and then see diagram se the ut khidre sida atomizer ko bo ponam jo thamdo ne man sida atomizer ko atomizer is ne karino sigi jes mai caption kan sida yauriba nungsit khaije se plus or minus taraga charge same ga doina sigi charge na ngasai gi kedogani thau sida charge se paksal kan thau se thau suppose droplet oiraga di sigi negatively charge oira doina negative charge ho ise kamai khange man sigi se plus oira sigi se minus man sigi se hek on tokanda hana oil drop ma magi
सो यांग न तारमदो मागी स्पीड से हंधगनी अब अदुनदि करी हारिनो वोल्टेज ऑफ तौरकान माजिना सो यांग न तारमजे नेगेटिव मान वोल्टेज हेग ऑन तौरकान सो तपिजे करी हारिनो हरगदी now there are two forces, gravitational forces, and as soon as you turn this on sigi plate sina mathak lom de chingya magi force na aduna ne magi speed andar is man sigi voltage so mehankala kan my speed se so mandara kani voltage amada magi speed se zero era mas sigi oil drops mathak ta chatra makha da chatra adu da kari hari no matam da force ani se chap manare habana karam force no one is force due to gravity which is moving which is acting in the downward direction atopaduna mathakta magi plus sina chingba so we can see this at this ling dra matam sida akoi si condition je haiba ngame q times e is na mathakta chingba force ne is equal to mg sina makha da chingba force ne एमदी करिनो मास ने मास अखोई पुथोखरा अखोई खांगी each droplet के अखोई मास खांगी g अखोई खांगी acceleration due to gravity ने e electric field ने अखोई ना सीधे electric field अखोई voltage के हापे अखोई खांगी अदर गदी सी पोत अहोम जे खांगा गदी अखोई q से पुथोक पंगमे q से करिनो q is the charge of each oil drops and what Millikan found was Millikan ने करी सी एक्सपेरिमेंट से तो कहने कहता हुआ चार्ज से मानस में तो रगा टेबल में सेम है ड्रॉपलेट मसिंग में याम की चार्ज से सम ई वो मान चार्ज से लोई नो तो मान दे मसिंग लोई नो अदुबो चार्ज से तो फंगी वो मयाम से मसिंग अमने येन बया है करम मसिंग ना 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb हाइबदी सिदना suppose this charge is let's call this x the charge here is 1x over here is 5x over here is 3x over here it is 4x I never get Millikan never got let's say 3.5x it's either 4x or 6x or 2x or 1x aduna haibadi karino aduna haibadi charge से अखोई खांगे सिगी ऑयल ड्रॉप अमदा चार्ज स्वाइन तोरक अटैच तो बुया अदुरगदी सिगी से मरी ओरगदी this will be 4 times x तरु ओरगदी it will be 6 times x अदुना हाइबदी सिगी फंडामेंटल पार्टिकल सिगी चार्ज से कया ओरने it will be 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb and that is what we call electrons the charge was found to be an integral multiple of this number and now we know the charge of a particle from the previous experiment. Remember, we know what is E by m. Now we know this, we can find out, and we know this something into 10 raised to minus 11. So you can find out what is m. So mass of electron was found to be this much. Now with these experiments, akoy khange atom maji thugai ba yai. ಅದನ್ನು ಡಾಲ್ಟನ್ ದು ಚುಮ್ದರೆ atoms are not indivisible ಅದದಿ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪುಥೋಯ್ ಇ ಬೈ ಎಂ एक्सपेरिमेंट तवनु पादुना माना एटॉमिक मॉडल में पुथोय प्लम पुडिंग मॉडल का मरुय मॉडल नते सम तंबने माने करी है एटम में जे स्माइन तोरगा नो पिज्जा दाउना है फेर माने अद नेगेटिवली चार्ज पोट मयाम ले मौरी दनो पॉजिटिवली चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज ओरी के तो बनो अखोय एटम से न्यूट्रल वैसे दिखांगे आप पॉजिटिव से करीनो वरीनो खांग दे अखोय मतम द प्रोटॉन से करीनो खांग दे न्यूट्रॉन से करीनो खांग दे अखोय इलेक्ट्रॉन खक्त ने खांगे से अदना थॉमसन की एटॉमिक मॉडल द अखोय इलेक्ट्रॉन खक्त नहीं सीधा हरी मखा से करीनो खांग दिया अखोय से मखा से पॉजिटिवली चार्ज ने अदु खक्त ने खांगे से ओके ngasi gi matam sita akhoi atom ase pot ohum na semi electron proton neutron proton is so it still is made up of smaller particles called quarks ado class 11 12 ta khoi masi tam gum si no gi direct ta kari hai
एटम असी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न सेम बने अदु खक्तंग लेरसी इलेक्ट्रॉन की चार्ज करीनो अखोय बजिक पुथोखरे माइनस नि प्रोटॉन की चार्ज करीनो सिगै नि चार्ज च माने अमन नेगेटिव ना मन पॉजिटिव ने न्यूट्रॉन जी चार्ज याउदे सिगी मसिंग सिदे अखोय हंजन हंजन हाइब नुंगाई तबनिना अखोय करी है इलेक्ट्रॉन की चार्ज से -1 नि है प्रोटॉन की चार्ज से +1 नि है प्लीज रिमेंबर व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ -1 इट मींस minus this much. So when somebody says calcium has a charge of +2, what it means is calcium has a charge of 2 times 1.6 into 10 raised to -19 coulomb, -19 coulomb, and this is plus, so that it will be plus. Please remember this. When I say +1 +2, it is +1 times this plus -1 times this plus 3 times this minus 2 times this. Mass of an electron is this much. Proton की mass ना सिगाई नहीं सीधे किलोग्राम नहीं होगा कोई मरक तक कोई ग्राम दे सी ना करनी किलोग्राम दे ग्राम दो उन्थों क्या रखा दिखाई दो we multiplied by 1000 ना से पूरी रखा दिखाई हो रही से -28 हो रही remember -31 kilogram -28 grams -27 kilograms और -24 grams 10⁻³ की डिफरेंस ले दो इन्हें -24 kilograms -27 kilograms -24 grams सीधे निंगसांगो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास इट्स अराउंड द सेम न्यूट्रॉन खितंग लुम बहेली इलेक्ट्रॉन की मास ती याम दे अखोय किलोग्राम ग्राम नतबा अथोप यूनिट अम जो सियनगनी केमिस्ट्री दा इज कॉल्ड U, which can be read as unified mass unit or even atomic mass unit. Atomic mass unit amma है क्या नो 1U is equal to 1.66 into 10 raised to -24 grams. सी कन्वर्जन ने सी कन्वर्ट तो रकांदा mass of proton is about 1U, slightly greater than 1U. Neutron is about 1U, and electron's mass can be taken as almost 0 in terms of U. Mathang da Rutherford को नुपाम ना साइंटिस्ट हमना जे थॉमसन की छात्र ने माना एक्सपेरिमेंट नम तो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ना सीधा करीनो मान तक दो इसे सीधा की माना अल्फा सोर्स हम लग रहे हैं अल्फा से मतम दो खोई खाएंगे अल्फा इज अ चार्ज ऑफ +2 चार्ज यदि करीनो इट इज प्लस इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to -19 coulomb, and it has a mass of around 4U. 4U यदि करीनो we have already seen the U conversion from U, so it is 4 times 1.66 into 10 raised to -24 grams. If you want in kilograms, it will be -27 kilograms. Alpha particles कोई करी नो खाएंगे आप. So सीधा कि alpha particle हाँ पे सी experiment से क्या अंताज़ी मान सीधा gold foil हम थम्बे आप. Gold foil यदि सना मतुम हम लाउरगा नुंगधंग न सुम थारा सुम पाहनबा लास्ट यामना पाबा चीदगी है ना पाबा सनागी स्वाइन तरह मपाक हम सेमदोइने सी गोल्ड फॉइल का हुए अदगिदी मान करी तौर सीधा अल्फा पार्टिकल ने सीधा सनागी फॉइल ने गोल्ड फॉइल ने सीधा माना अकोई बदा पोट नम स्वाइन कोइसल थम्मे सिगे सीधा अकोई मान करी हुए जिंक सल्फाइड की कोटिंग तौर जिंक सल्फाइड कोटिंग तौर करी नो ngасai alpha particles na kadai de ye do ngasai mangan do na khanga do ina aduga sida mana sida gold foil ji laktra kan sida alpha particle na ye ba mafam do he called it 0 degree adi gold foil ji na kaim tawdraga di alpha particles ji sida la ye do ina mana sida thame atai sina mana sida 5 degree 10 degree 20 degree 30 degree 90 degree 110 180 सिलोइन मक मान हाने यक्सल थमे सी ये इसने कह दो बइनो अल्फा पार्टिकल जे सपोज मागी हाने की लंबी दे सीन निको
sidagi honga ga di kayam honge do khang na. And when he did this experiment, what he found was most of the alpha particles passed undeflected. Ayamba alpha particles magi 0 degree duda laaga yayya. A small fraction khara are deflected by small angles. Angle 1 degree, 2 degrees, 10 degrees they deflect the wave. Masing khara. Adubu very few, about 1 in 20,000 goes back and are deflected by a big angle. See angles here. This is almost close to around probably 140, 150. So see this means question doing so or kadoin see. So actually I can have a very small slit here and I can compass this. So what he found was about 1 in 20,000 comes back and hits here at 180 degree. See the experiment see putokanda magi satrani ka lai Geiger kaubam ga Marsden kaubam ga moina sige experiment se tawbani matam do Rutherford ti Nobel Prize phangaba achauba professor mane ma di experiment tawponte mai satra ne experiment tawbani experiment ji da mana atomic model am puthoya. Electrons revolve around the nucleus just like planets. Yung sige ji am namaru ne J.J. Thomson की द इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर लेते रुदरफोर्ड न करी है अकोई सोलर सिस्टम द मया इदा निमित लेरगा इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स में कोई बस में ना अकोई की इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस around the just like sun and solar system. Most of the atoms consist of empty spaces. See no kari hari no see maram karai dei no hari je kari no the most of the alpha particles go undeflected. Adun hai bedi and deflect tagdurgade adu karim leiram hoy adurgade most of the atoms consist of empty spaces. Nucleus is positively charged. It is at the center of the atom and it has all the mass. And the size of the nucleus is very very small compared to the size of the atom. See the see kona so higher kananom na matam da hai. Suppose akoy bus am leire khala se bus sida mi am phame mi do na khabar am par khabar du da English ki khabar ne khabar du da wahi iram gani adu da I da dot macham iram namam gani dana mi do na hai. Suppose atom ji na bus simuk chawra gadi nucleus se hoje ki khabar da yari ba I ye mathak ta nami ba dor to aduk chawen adun hai badi size of the nucleus is very very small compared to the size of the atom. Okay, see the problem am lai see problems in solve ta ubanga moido se Rutherford na magi theories in chummaga di yang see the nucleus lai re electrons is sum koi re. There will be a force of attraction between because this is negatively charged and he said nucleus is positively charged. There will be a force of attraction. Other the electrons some coir can some naxalakane some naxalakane some naxalakane last the nucleus ke mathak ta tara atoms mutkani. And he also calculated that this will happen in a time which is much lesser than a second. Other the Rutherford ke atomic models in a chummagadi atom amma has 10⁻⁻10 second the hen koi na lai royo. Adubo we know that atoms exist for a very very long time. We are all made up of atoms, which means this is the main problem of Rutherford's atomic model, which will be solved by his student and which we will discuss in the next video. Sini. Thank you very much. Mathangi video damu unarase.